Good morning, everyone. Good morning. Good morning. फॉलोमेंट रेजिमेंट से फॉलो करके एनालिसिस करना, मिस आउट मत करना, राइट? ड्रैग आउट कन्वर्जन्स के हिसाब से अलोकेट करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ अलोकेशन इज वेरी सिंपल. टारगेट कंप्लीट होने तक नया टारगेट नहीं अलोकेट करेंगे, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेसिंग जो भी हो, राइट? जब तक जोन ऑफ एक्शन में है तब तक बने रहेंगे. हाई वॉल्यूम स्टैकिंग के हिसाब से ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशंस देखेंगे एंड विद दैट फॉर्मुलेटिव मूवमेंट एक्शन प्लान को रीअलोकेटेड स्ट्रक्चर में रीअसेंबल करेंगे, राइट? So always remember, identify the nearest point of actions, why the market is trying to take a rejection. Each and every intact level will act as a pursuant moment. So follow through that moment action plan and execute the directional trades. Okay, Smita ma'am? नहीं. Regiment ratios, allocations in gold is not that necessary because TTS 2.0 is only nicely followed in the direction, right? So in that, you don't have to look for a new allocation point to readdress the scenarios. Whenever there is reallocation, then we'll look for a segment of high volume to the high calibration point. With the high calibration point, we'll remark the structure. हाँ, कल के दिन में वो एक आया था. तो सी डेफिनेटली मेरे को भी इधर एंट्री नहीं मिली थी, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या करना है हमें? वेट फॉर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन टू एग्जीक्यूट द ट्रेड ना. सो वी एग्जीक्यूटेड द ट्रेड हियर. सेटअप यहाँ पे क्रिएट होते हुए देख. कीपिंग इन माइंड दैट वाज ए एग्जैक्ट 200% रिजेक्शन ना, जो कल एनालिसिस शेयर किया था उस हिसाब से. So always look for a movement which has been identified through the structure imbalanced movement so that you don't get that greed or FOMO of missing out. Good morning, Ushma. Good morning, Ritesh. Good morning, Pankaj. Radhe Radhe. हाँ, ट्रेड कल से ही चल रहा है हमारा. स्विंग स्विंग का फर्स्ट एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पे था 3 विंग सेटअप के साथ. सेकंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे की है कल न्यूयॉर्क सेशन में. आज के दिन में एक ही लॉन्ग का ट्रेड में बैठा है with S2B1 again over here. Keeping in mind, market should come back again till this zone. With this zone of action only, continuity in the movement. Okay? नहीं Agastya. See, I am okay to let it go. 100 pips के चक्कर में I don't want to get trapped in the structure of not following the resemble of 300 400 pips. स्विंग ट्रेड में हमेशा वो एक चीज याद रख लो. डायरेक्शन पकड़ना है तो हाई कैलिब्रेशन पॉइंट को कंप्लीट करने दो. उसके बाद कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट.
अभी कहीं एंट्री बन सकती है, करंट इंटैक्ट लेवल से देख लो। ओके, या सो डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। ठीक है अगस्त्य। सेम फॉर्मेशन। क्यों हमने कल पूरा स्विंग एग्जीक्यूट मींस एग्जिट किया था, एक्सेप्ट परसों का जो मींस नाइन्थ का जो ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन था लॉन्ग का, वो छोड़ के दूसरा सब क्यों एग्जिट किया था? देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट ना, फॉर एग्जिटिंग द ट्रेड्स। So always remember, market gives you an indication to exit. Market ने यहाँ पे indication दिया, यहाँ पे indication दिया, but why we selected this point only to exit the entire? Because high calibration point of action तो वहां पे खत्म हुआ ना। एंड नोटिस करो नीचे की तरफ यहाँ पे अभी भी हमारे पास बहुत सारे लिक्विडिटीज है। बिना वो लिक्विडिटी खत्म किए मार्केट मूवमेंट ऊपर के लिए नहीं देगा। 1 आवर में दिखाता रहो, सो दैट आपको अच्छे से पता चले व्हाई इज दिस मूवमेंट कमिंग डाउन एट दिस करंट स्टेट, राइट? इंटैक्ट वन, इंटैक्ट टू, इंटैक्ट थ्री, इसमें से हमें एटलीस्ट दो इंटैक्ट चाहिए जो मेजर रेंज ऑफ मोशन में काम करेगा। जब तक वो इंटैक्ट्स डेवलप नहीं होते, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ रेंज में नहीं आते, विल नॉट लुक फॉर अगेन अ स्विंग गोल्ड, विल बी लुकिंग फॉर आईडी ट्रेड्स। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा शॉर्ट का स्विंग जो अभी चल रहा है वो एग्जिट कर देंगे, एंड एड ऑन में हम लॉन्ग के तरफ देखेंगे। आईडी में करते रहो 150 पिप्स के लिए ऊपर नीचे करते रहो, दैट्स टोटली फाइन, राइट? बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्विंग ट्रेड इन पर्टिकुलर, ऑलवेज रिमेंबर, राइट, इन दिस मोशन रेंज, ये जो कल के दिन में हुआ था ना मीटिंग होने के बाद, so, in this point of action, what does the retailers do by seeing this kind of candles? They will look for a long position handling, right? When they look for a wrong positional handling, sorry, wrong bolo, long positional handling, market will tend to hunt them out, no? In proportionate. So in that particular moment, you have to always wait for a right movement action plan, right? What is volume indicating over here, right? A reversal action plan, क्योंकि हाई कैलिब्रेशन पॉइंट यहाँ पे खत्म हुआ। So whenever there is a pursuing movement actions which you see in the chart, always remember setup नहीं मिला तो that's fine, next setup में entry जो direction volume बता रहा है उस direction में रहना होता है। You have to always be in the direction of the volume, not against it, right? Iceberg range में you play, you do your intraday, you look for an execution for a short nearest supply or demand allocation points. But holding जब जाते हो, always remember the holding pursuant only should be till the next high calibration point. If the next high calibration point isn't completed and उसके बीच में ही आप फिर से holding में जा रहे हो, that doesn't make sense only, no? Getting my point, what I'm trying to say. टारगेट कहाँ तक होगी सर? सेटअप तो क्रिएट करने दो जनाब पंकज। Right, so always remember to look in fourth movement of the direction so that you don't get trapped in the movement action plan of
The retailers FOMO execution. उनके FOMO execution में आप भी execute करोगे, then you'll get trapped. Definitely by looking in pursuant of this candles, right? यहाँ पे आप swing नहीं ले सकते हो, right? यहाँ पे आप ID ले सकते हो setup के साथ for 100 pips, right? क्योंकि allocate करोगे तो 100 pips का ही movement मिलेगा ना आपको setup के साथ, दिखाता हूँ कैसे, right? So this is your previous supply, which we will act at the current state, right? So in this point of motion, first 100% break and continue जब दिखाया, market tend to take a rejection from the nearest 150, right? अगर 150 से directly आप motion plan of action में यहाँ पे continue करोगे ना, you won't be able to suffice. Why? Because यहाँ पे indication दे दिया ना. हाँ, माना कि आपने फोर्थ कैंडल में एग्जिट करके फिफ्थ कैंडल में शॉर्ट किया, बट what is the motion range, right? You could have exited at the third candle rejection itself. Fourth candle तक wait करके execute करना is on the proportionate onto the previous, so that you're waiting and hoping that the market will move in the direction. That is wrong. Entry 43. 43 में एंट्री हो गया तो फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया था ना. अगेन, राइट? आपने जो टारगेट रखा था 3626 का, वो टारगेट भी कंप्लीट हो गया. एट द करेंट रेंज में तो आपको एग्जीक्यूशन नहीं है, राइट? अगर आप ये फोमो सॉरी ये ग्रीड में आप होल्ड करके बैठे हो, डेफिनेटली द मूवमेंट एक्शन प्लान विल लुक इन टू द प्रीवियस मूवमेंट टू द करेंट, राइट? मतलब आपको फिर से एक असेंबली मूवमेंट दिखेगी यहाँ पे, उस मूवमेंट में निकलना है तो निकल, राइट? But 43 to 35, still you are in really good 80 pip movement run, where you can look for a closure at least. TP बुक कर लिया है, ग्रेट. बट अगर नहीं बुक किया है तो always remember, market doesn't give you multiple choices to look for an engagement execution, engagemental executions, right? So pursuant में टारगेट्स में निकलो स्टार्टिंग में. गुड जॉब अंबिका. मेरे को यहाँ पे ऐड करना था, बट सुबह सुबह मूड ही नहीं थी ऐड करने की, तो उसके लिए लॉन्ग लिया. हाँ. सॉरी पीपल हु आर इन लाइव स्ट्रीम, जो भी डाउट्स है पूछ लो. स्ट्रीम विल बी देयर फॉर अनदर 30 minutes, नॉट मोर देन दैट. शौर्य, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दो सिर्फ फॉर स्कैल्पिंग.
You can't use mathematical concept for scalping. At least you have to capture, because we do it in 15 minutes. You have to look in pursuant of 4 to 5 candles, right? We don't trade in 1 minute or 5 minutes. अगर 1 minute और 5 minutes में ट्रेड कर रहे हो, find the nearest point. Just for an example, people who are trading in that, एक moment action plan नीचे के लिए आ रही है, right? With that, nearest form of action will be built. With the built on action, the continuity in the movement will be showcased, right? Swing high, swing low को calculate करना, उसके बाद get into the repositionate allocation of the retracement, and you will get the number. उधर तक का ट्रेड होल्ड करके बेच सकते। कब 0.5 लेना है, कब 0.6 लेना है, 0.5 0.6 स्क्वायर रूट वाला अगर फॉलो कर रहे हो, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मुलेशन काम सिर्फ Q1 एंड Q2 में करता है, एंड वी आर करेंटली इन Q3, right? So it won't work at the current stage. So follow TTS 2.0, which is MC2. गुड मॉर्निंग प्रवीण। गोल्ड में 15 मिनट्स डिमांड में मिनिमलिटी है तो 150 या 200% तक वेट नहीं करेंगे क्या? If you're talking about minimality M2 of this candle, the proportionate ratio, yes, definitely we will look for that trade. उसके लिए हम लॉन्ग में ही हैं, बट यहाँ पे एक इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट चाहिए, हम कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट चाहिए, right? Follow with the MTSL person, follow with the MTSL persona and hold the trade. शॉर्ट की तरफ तभी एड ऑन देखेंगे जब मूवमेंट एक्शन प्लान आपको सेटअप क्रिएट करते हुए दिखेगी शॉर्ट के लिए, तभी आज के दिन में शॉर्ट के लिए देखेंगे। एट द करेंट स्टेज मार्केट ने लॉन्ग का ही सेटअप दिया है, तो लॉन्ग में है, सिंपल। गुड मॉर्निंग जय जी। नहीं नहीं हर्षित, रुक जाओ यार प्लीज। सर में वेव थियरी प्लस वॉल्यूम डेटा प्राइस रेंज 50% 75% मार्केट जा से पैसा उठा रहा, उस हिसाब से लगा। आपके मर्जी है, अगर वो आपको काम कर रहा है, वेल एंड गुड। ये सब बहुत अच्छा वर्क करता है, पर मार्केट काफी ज्यादा एडवांस हो गया। मार्केट एडवांस नहीं होता है जनाब। सी कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जब तक मैथ्स के थ्रू नहीं होता है ना,
तब तक मार्केट में एक पॉइंट मोशन रहता है. Once a multiple standard of people uses continuously with the same concept, then it indicate us that from this point of action, people will look for a trade. That's where we look for an hunt. तो उसके लिए वो एक टाइम होने के बाद वो काम करना बंद कर देता है. एंड मार्केट कभी एडवांस नहीं होता है. मार्केट स्टार्टिंग से ही एडवांस्ड है. सर बीटीसी आ रहा हूँ कुछ. ये लेवल्स देख लेना पंकज. ठीक है. दिस आर द लेवल्स. ओ नहीं सर, जब 3675 से रिजेक्शन दिया 14 यूटीसी, उसके बाद एक 1415 पे एक रिजेक्शन आया और डाउन मूव कंटिन्यू किया, और वहां पे डिमांड में मिनिमलिटी है जो आपने डिमांड 100% मार्क किया है. तो 100% से पहले मिनिमलिटी है, वो वहां पे 150 तक वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? यूटीसी 14. एक सेकेंड चेक कर रहा हूँ. 14. 14. 15. दिस इज नॉट मिनिमलिटी जनाब. यहाँ पे मिनिमलिटी मार्क कैसे करोगे आप प्रवीण? एक्शन रेंज ऑफ मोशन में तो डिमांड ये लोगे ना आप. तो ये मिनिमलिटी कैसे वर्क होगा? इन प्रोपोर्शनेट जो नया हमने मार्क किया है, वो 100% के रेंज में से ये वाला अगर आप कंसिडर कर रहे हो, 1445 का मिनिमलिटी काम करेगा कि नहीं, उसके लिए हमें एक ब्रेक थ्रू मोशन ऑफ लिक्विडिटी चाहिए. वो ब्रेक थ्रू मोशन ऑफ लिक्विडिटी जब मिलेगा, तब जाके वो कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट ऑन द ब्रेक ऑफ 100% होगा. उससे पहले नहीं. ठीक है प्रवीण. अच्छा, थैंक यू सर. तो मेरा ये सवाल है कि अपना एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर वीडियो जो बनाया है वो अब नहीं काम करेगा. मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमने 3 वीडियो डाले हैं शौर्य, राइट? उसमें से क्वार्टर वाइज क्वार्टर हमने डाला है, राइट? सो Q1 Q2 का आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट वाला आप लेके Q3 में यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा. उसको यूज करना है तो फिर से आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा. उसके बाद जो ईच एंड एवरी टाइमलाइन Q1 Q2 Q3 Q4 हर एक फाइनेंशियल क्वार्टर्स में जो चलता है, उसे हम MC 2.0 कहते हैं, जो कि TTS 2.0. वो यूज कर लो, राइट? और एक है कन्वर्जनल मूवमेंट्स ऑन विद सप्लाई एंड डिमांड. वो भी Q3 Q4 एंड Q1 में काम करता है. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आप यूज कर सकते हो. Q1 Q2 स्पेसिफिक स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट सिर्फ Q1 और Q2 में ही काम करेगा. ओके. गुड मॉर्निंग रचित, कैसे हो? आई एम sick and I have cough and fever. From Rachit, have a nice day, sir. You too, Rachit. Get well soon.
Okay, Shurya, hope you got the point. Third wala MC, I don't remember. Usma, the same one. Combination of MC 2.0 and supply and demand, which is TTS, ना? एंड शौर्य जो मैसेज आपने डिलीट किया ना वो हमारा क्लोजिंग था स्विंग ट्रेड का राइट इफ यू नोटिस इट्स द सेम लेवल कहाँ से ट्रेड पकड़े है फ्रॉम द प्रोपोर्शनेट मूवमेंट दिस आर द एग्जीक्यूशन पॉइंट्स फ्रॉम दिस रेंज till that so the closure was of 1350 pips okay sir I understood no worries शौर्य आप सिखाते हो गया सर हाँ Shaurya, that's where sales analysis closed for long and we exited the swing trade. वो भाई साहब तो जिंदा है वरुण गुड मॉर्निंग नहीं नहीं रहने दो फैजा लेट इट बी कीप इट अप गाइस इक्विटी M2 का नेक्स्ट लेवल अलोकेशन कर लेना उसके बाद ही आएगा वो 200% तक डायरेक्ट अलोकेशन कीप इन माइंड विक क्रिएट नहीं हुआ है इस कैंडल में सो बी केयर MTSL स्ट्रॉन्ग रख लो सब लोग
Yeah, that's really good here. नहीं नहीं, हेमंत को बोलो। चार, क्या बोलते हो? चार चांद लगा दिया है वो बंदे ने। Sir, minimality is for sir, minimality is for Q2, Q3. No, substantial minimality is still entire year. Full follow through में लेके चल सकते हो. S1 setups is for Q2 and Q1. Okay. Minimality M3 and M2 is for Q3 and Q4. M1 is Q1, Q2, Q3, Q4. Okay. I am manifesting दिल से कि मेरे पास पैसा आए और मैं TTS concept बुक खरीद लूं. 150 boys running. 150 कुछ भी. वॉइस क्या होता है? निकाल दिया बंदे ने.
ले तेरा 200 पॉइंट्स भी 40 पिप्स में हो जाएगा। दो नोशन पॉइंट है जो पेंडिंग है अभी तक, वो कंप्लीट हो जाने में। मजा कब आएगा पता है? ये हल्का सा विक दे के ना कंटिन्यूटी में जाना चाहिए, राइट? ये पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट कर जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो अगर, very simple, if the market directly moves and make everyone sit in the running candle, complete 150 and 200, with that motion market एक बड़ा सा fall दे, continuity, that will create more impact, because currently high volume zone of action होने के बाद there is no high calibration point to redirectionalize the movement. तो redirectionalize नहीं होगा movement, so definitely market will trap all the retailers who are sitting and running, right? So example, people who have looked in proportionate to execute the trades through pullbacks, right? So example wise लेके चले तो इस जोन ऑफ एक्शन में बैठे हैं, इस जोन ऑफ एक्शन में बैठे हैं, राइट? इनको सब निकालना है। अभी ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे बैठे हैं, राइट? So these are the major SLs that what we'll be looking for. Okay. सर आपके लिए ये इजी होगा, बट मैं तो पहले बार सुन रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एडवांस होगा। ये दिमाग के ये दिमाग के उड़ गया। ओके। शिट। हाँ, बट एक चीज नोटिस कर लो मिस्टर, द ड्रम ट्रेडर इधर वीक नहीं है, ठीक है? तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। Stream will be there for next 10 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. पहले प्राइस एक्शन सी का, फिर एमएमसी, आईटीसी, फिर लिक्विडिटी, फिर वेव थियरी, फिर मार्केट, जहाँ से पैसा
रहा है और वॉल्यूम so many things I learned. Nice. You know what's the problem, Shaurya? You learned so many things. You didn't master one. Sir, allocation with wick consider करना है या नहीं ये confusion है. For example, why we didn't take the wick of 1945 Indian timeline. 1945. 40. Why, sir, why we didn't take the wick of 1945? When allocating, we started the allocation from the red candle. Why? It's clearly mentioned in the book, no, Ritesh? Allocation of the structure will be taken in consideration of to the previous. Read the book. When you take 1930s movement action plan only, your 1945 is covered in that. So why will we take that again? And if you're looking in perspective of allocating a supply, high wick range हमेशा wick से लिया जाता है. I've explained you multiple times, but you're not taking that and you're not applying it. Whenever there is a small wick, first allocation will be taken in consideration of the body, then the wick. Why do you guys miss out on that? I don't understand. Every time. Sir, your voice is low today. We were doing lot of party yesterday. तो उसके वजह से थोड़ा गला बैठ गया एंड उसी की वजह से आज थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट हो गया. बट ये जो आप बता रहे MC 2.0 एंड स्क्वायर रूट वगैरह, आई एम सो मच एक्साइटेड टू लर्न. यू आर राइट सर, बट मुझे और डेप्थ में जाना है जो रियल में वर्क करता है, उसी को अपना स्ट्रैटेजी सेटअप बना के फॉलो करना है. हाउ मेनी इयर्स इन ट्रेडिंग, शौर्य? या कितना महीना हुआ ट्रेडिंग में? रूल इज सिंपल, अरुंधति मैम. ये विक क्रिएट इतना ही रहने दो, राइट? ये रेंज में ही रहने दो, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से ऊपर, तब मजा आएगा. अगर ये डायरेक्टली इधर से ही ड्रॉप देगा, देन डेफिनेटली पीपल विल गेट आउट इमीडिएटली, राइट? ये कंटिन्यूटी देने दो 150% तक फर्स्ट, उसके बाद एक्चुअली M2 है, सॉरी 200%, राइट? बट 150% से एग्जीक्यूशन देख सकता है, to start looking for execution, but SL range thoda bada hoga, but that's totally fine. Hey, drunkards can do anything, huh? But एक चीज याद रखना, पूरा कवर, ये जो लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट है वो पूरा नहीं होना चाहिए. 1 year only. Sure, if you had mastered one setup for 1 year, no, you could have been in the retailer 85% range of success ratio.
This stream will be on for next 5 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do let me know. इसे फॉलो करके चलना स्ट्रॉन्ग रो जो जो लॉन्ग में है and all the party freaks. Please keep it strong. Good to know that, Shaurya. Shaurya, internet scroll करना बंद कर दो. Focus on one strategy. Okay? ये इंस्टाग्राम में जो बताते हैं, राइट? एंड ये आप जो न्यूज़ में देख, राइट? फॉलो न्यूज़, नो डाउट. न्यूज़ में क्या फॉलो करना चाहिए? इट्स ऑल इन पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी स्टैंडर्ड्स, नॉट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल सेइंग मार्केट यहाँ तक जाएगा, वहां तक आएगा. वो नहीं फॉलो करो. कंपनी पैरामेडिकल स्ट्रक्चर्स होता है, राइट? उसे फॉलो करो. एंड ये इंटरनेट में जो बोलते हैं ना लोग, प्लीज इग्नोर दैट. ओके? स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुआ था कोविड में, तो सबको लगा कोविड की वजह से, बट ये सब प्री प्लान था. एक्चुअली में मार्केट का 2x कंप्लीट हुआ. Well, no doubt experience matters. How did you know the market will continue without completing the liquidity grab? हैंगओवर बूस्टर पी ले तो पहला, जो हम रोज करते हैं वही किया है. ब्यूटीफुल गाइस. अरुंधति मैम, स्ट्रक्चर एज रिक्वेस्टेड फॉलो हुआ है, राइट? फर्स्ट ड्रॉप बाय 146 से एक रिजेक्शन देखेंगे. अगर वो रिजेक्शन पॉइंट इंटैक्ट लेवल से नहीं डेवलप होता है, देन विल लुक फॉर द नेक्स्ट. ओके? एक rejection point of view will be taken under the consideration from the current intact level of 44.
Okay, that is the first one. Second one is direct 150, which is at 48. 51 minutes to go. 51 bold draw. 30 minutes to go on 1 hour candle closer. So if you look into the perspective of the screening structure is indicating a nearest intact level point, right? With that intact level point, the next allocation will be taken under the consideration of 28 and 32. You will check here in Nifty 50. You will check here in Nifty 50 1 month. ये मार्केट का पहला विक स्विंग लो से देन आपका हाई मिला और वहीं से मार्केट के गिरा so much of insurance circle की वजह से क्रैश हो लेकिन now this looks so guys, everyone, all the new members, sir, how many trades we should open on the setup and when to book TP on each? The rules are simple, Usma. Alright? Trades आप कितना भी open करो setup के साथ, not an issue. Add on कितना भी करो, not an issue. But it should be in your range of risk to reward, plus it shouldn't harm your capital. Okay? So look in that perspective and targets as you are an intraday trader, not a swing trader. So 100 pip to 150 pips is what you will be looking to achieve, right? Following the MTSL point post every 40 pips. अगर 40 pips से पहले ही rejection ले रहा है, then you can look for a CTC closure or a 20 pip closure for a safer side range. Okay? Only for a safer side range. And all the new members, whichever strategy, whichever concept, whatever you are following, 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis with 1 month of live analysis, come with a smaller capital, compound the capital, make sure to protect the capital with following a proper risk to reward, and controlling your mind with FOMO and greed is very much important because it's your money, it's your mindset. Using your strategy to prevent in the directions of mathematical numbers is very much important. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.